हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। So before we start, subscribe to the channel and press the bell icon to get notified whenever new video is out. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. In the previous video, we discussed permeability. Okay, so which molecules pass कर सकते हैं and some molecules cannot pass to the membrane, right? अभी जो ट्रांसपोर्ट है इसके टाइप्स है। Transport, there are types of transport: active, passive. These are the two types of transport, or we can say two modes of transport across the plasma membrane. एक टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है when we are discussing the transport, that is concentration gradient. Concentration gradient, right? What is this concentration gradient? Again, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट होता है। ओके, सपोज यहाँ पे एक साइड पे कुछ मॉलिक्यूल्स हाई होंगे एंड कुछ मॉलिक्यूल्स लो होंगे। ओके, so this is the concentration gradient, right? High or low. Suppose I draw with different color. Red molecules I will draw now. Okay, so red का concentration नीचे high है, ऊपर low है. Okay, so basically this is a concentration gradient. Right. One more term comes here, that is electrochemical gradient. Electrochemical gradient. What is this? बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो है ही, उसके साथ साथ मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट आल्सो कम्स इन पिक्चर. ओके, so electrochemical, we can see electric, right? Electric means it is related to electrical charge. Okay, electrical difference, so that is basically membrane potential. So these are the two important terms when we are studying the transport, right? Now let's see these types of transport one by one. Okay, first is passive transport. Passive transport. Passive transport is high to low movement of molecule. Okay, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर मूवमेंट यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ टर्म नोन एज डाउन हिल मूवमेंट. ओके, डाउन हिल, और वी कैन से डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. डाउन द concentration gradient. Okay. One more point, also this is known as along the concentration gradient. Along the concentration gradient. Okay, so these are the important term about passive transport. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस हमें पता है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो डिफ्यूजन ये टर्म इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर स्टडीइंग द ट्रांसपोर्ट
of molecules across the plasma membrane, right? Second type is active transport. Active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये अगेंस्ट अपोजिट पॉइंट होगी, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट इज लो टू हाई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें टर्म है अपहिल, अपहिल, राइट? वहाँ पे डाउन हिल था, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे अपहिल है। The passive transport, it is termed as along the concentration gradient. This is known as against the concentration gradient. Against the concentration gradient. Okay, uphill, downhill is the movement, right? And the fourth important point is energy is required. So what is energy? Basically ATP. Say ATP चाहिए, ओके? अभी हम इसे याद कैसे रखें? एक्टिव में एनर्जी चाहिए, पैसिव में एनर्जी नहीं चाहिए। So to avoid confusion, very simple. I will draw your plasma membrane. Okay, this is the plasma membrane. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है हाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन। इधर से इधर जाना इजी होगा, राइट? हाई टू लो। सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये ड्राइंग है, बट वी विल रिलेट दिस विद वाटर, राइट? यहाँ से वाटर जा रहा है, ओके? यहाँ से वाटर जा रहा है। अभी इसमें इधर सपोज देयर इज अ होल, राइट? व्हाट इज दिस होल? दिस इज अ पाइप, राइट? पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है इन द हाई स्पीड। अगर यहाँ पे होल है तो पानी जो वाटर है नीचे आएगा फ्रॉम दिस होल, ओके? मतलब यहाँ पे हाई स्पीड थी, तो वी इट इज सेड दैट वी कैन नॉट कंट्रोल द वाटर, राइट? अगर उसे जगह मिली तो वो फ्रीली मूव करेगा, ओके? तो यहाँ से देयर वाज अ हाई मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर होल है यहाँ पे तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा, राइट? ओके, सपोज यहाँ पे वाटर वाज नॉट अलाउड, ओके? वी कैन से ये इलेक्ट्रिसिटी का कुछ तो होगा, राइट? इफ द वाटर कम्स हियर दिस विल कॉज अ शॉर्ट सर्किट, ओके? तो वाटर वाज नॉट अलाउड हियर। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में वाटर यहाँ पे होल से फ्लो हुआ, वाई? बिकॉज यहाँ पे हाई स्पीड थी वाटर की, तो दिस इज इजी मूवमेंट, राइट? वाटर फाइंड इट्स वे, ओके? तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का भी है। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स है तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन में इजीली जा सकते हैं, राइट? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इजीली जा सकते हैं। बट इफ लेट्स से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली यहाँ पे लो है एंड ऑन द अपोजिंग साइड इट इज हाई। So here it is high, here it is low. लो से और हाई में जाना है, ऑलरेडी लो है। सपोज ग्लूकोज, ऑलरेडी दिस साइड इट इज लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पे ऑलरेडी हाई है। लो से हाई जाना है, दिस इज नॉट अ नेचुरल थिंग, राइट? तो दस इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसे एनर्जी चाहिए, ओके? हाई टू लो जाना इजी है बिकॉज यहाँ पे इक्वल है ग्लूकोज। वी कैन रिलेट दिस हियर ऑल्सो। सपोज ग्लूकोज यहाँ पे ज़्यादा है, हाई है, हाई से लो जाना है ग्लूकोज, इट इज़ नॉर्मल थिंग, हाई से लो जाना है। बट लो से हाई में जाना है
यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी हाई है और हाई होगा, राइट? सो दिस विल बी अ लिटिल, वी कैन से, ट्रिकी है, राइट? तो द इसे एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज सप्लाइड बाय एटीपी, एंड इससे हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, बिकॉज अगेंस्ट है ये, राइट? हाई टू लो अलोंग है, हाई टू लो इज नोन एज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, ओके? नो एनर्जी रिक्वायर्ड, डाउन हिल, राइट? डाउन, एरो का पॉइंट भी डाउन है, दिस इज अप हिल, राइट? इजी है, जस्ट अंडरस्टैंड carefully the explanation. One more thing you have to know, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी टाइप्स है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, सो बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन के ही टाइप्स है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो टर्म्स है, दोज आर इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सिंपल डिफ्यूजन मीन्स जो मॉलिक्यूल्स है इजीली पास करेंगे, ओके? इजीली पास करेंगे, तो बेसिकली which molecules will come here? Small, hydrophobic, and charged molecules. जो परमिएबल है मॉलिक्यूल वो इजीली पास करेंगे, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। बेसिकली साइज स्मॉल चाहिए, हाइड्रोफोबिक चाहिए, एंड अनचार्ज, अनचार्ज नॉट चार्ज, अनचार्ज मॉलिक्यूल इजीली पास कर सकते हैं, तो दिस कम्स अंडर सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अपोजिट, लार्ज साइज, हाइड्रोफिलिक एंड चार्ज मॉलिक्यूल। कि अगर इजीली समझना है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, इट इज अबाउट द परमेबिलिटी, राइट? तो जो इम्परमेबल है मॉलिक्यूल या सेमी परमेबल है, इजीली पास नहीं कर सकते, उनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होता है। तो बेसिकली फैसिलिटेटेड मीन्स व्हाट, दिस इज कैरिड आउट बाय अदर थिंग्स, ओके? फैसिलिटेट करते हैं इसमें, कौन फैसिलिटेट करता है? तो बेसिकली दिस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स मीडिएटेड, okay? Proteins facilitate these types of diffusion. Proteins may be, there are two categories. First is carrier, second is channels, okay? Carriers and channels. Carriers को transporters भी बोलते हैं, okay? Carriers also called transporters, right? Now simple diffusion, ये diffusion simple है, but this is slow and this is fast, okay? तो facilitated है, उसका डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है यहाँ पे, क्लियर? नाउ हियर यहाँ पे प्रोटीन होगा, प्रोटीन से यहाँ पे मूवमेंट होगा। सिंपल स्लो क्यों है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फास्ट क्यों है? तो दिस वी विल रिलेट विद गेट। अगर गेट ओपन है, राइट, गेट अगर ओपन है तो फास्ट हम जा सकते हैं उस गेट के अंदर, राइट? एक क्लोजिंग का टाइम रहता है, गेट ओपनिंग टाइम एंड गेट क्लोजिंग टाइम, इवन ड्यूरिंग एग्जाम दिस हैपेंस। तो एक लिमिटेशन है कि गेट
क्लोजिंग टाइम के अंदर ही हमें जाना है. ओके, सो द दिस इज अ फास्ट एंड वी कैन रिलेट दिस थिंग विद अ गेट. अगर गेट ओपन है, फास्ट मूवमेंट होगी, राइट. सो एज वेल एज देर इज अ लिमिटेशन. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिमिटेशन. एंड यहाँ पे नो लिमिटेशन. सिंपल डिफ्यूजन देर इज नो एनी कंडीशन. तो मॉलिक्यूल्स मूव होते रहेंगे, तो फास्ट की जरूरत नहीं है. इवन स्लो इज ओके फॉर देम, राइट. यहाँ पे एक टाइम है, गेट ओपनिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम. So there will be fast movement. Right? Now let's see one graph. Okay, this is the graph. You can see two lines here. This is the one, this is the two. Okay, let's number it. So one है, that is simple diffusion. Simple. Okay. And जो second है, that is facilitated diffusion. Right. So you can see from this picture, एक point आने के बाद this line becomes flat. Okay, मतलब constant level का diffusion हमें दिखेगा. So why this is? Because it's limited by the rate of diffusion. एक certain limit क्रॉस करने के बाद जो डिफ्यूजन है वो स्टॉप हो जाता है. ओके, तो दिस आर द टू ग्राफ्स. नाउ नेक्स्ट थिंग इज important point you have to remember. Both active and passive transport follow second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो करते हैं. एंड जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दैट फॉलोज फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. These are the two important points you have to remember about the transport. So what is this basically? Graph. Here it is rate of solute movement. Rate of solute movement. And यहाँ पे concentration. Solute concentration. Okay. So you can see जो simple diffusion है, अब एक straight line है. So that is directly proportional to the rate of diffusion and rate of concentration. So diffusion rate है, that is directly proportional to concentration of solute. And जो facilitated diffusion है, that is basically limitation है. Facilitated diffusion is limited by rate of transport of solutes. Okay. तो लास्टली यहाँ पे पिक्चर है फॉर इजी एक्सप्लेनेशन. कैन सी यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट शो किया है एज वेल एज एक्टिव. एक्टिव में देयर इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड. यू कैन सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है हाई टू लो, राइट. लो टू हाई अगर जाना है दैन इट रिक्वायर्स एनर्जी, सो दैट इज एक्टिव. एंड जो पैसिव है दैट इज मीडिएटेड बाय चैनल एंड ट्रांसपोर्टर. ओके, तो टू ग्रेडियंट एज आई एक्सप्लेन. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता, राइट. फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज व्हाट मैटर्स. सेकेंड टाइप है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जिसमें हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एज वेल एज प्लस एंड माइनस रिप्रेजेंट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल.
Okay, so this is about the transport. That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.